Hello. Assalamu alaikum, Sorath. Am I audible? Walaikum Assalam. Nikeeta, you are audible. And hello, Nikeeta, am I audible? Yeah, you are audible, Sorath. Yep, audible, Okay, yes. good. Also, we are live with Facebook now, and yep. Sorath, are you sharing the screen right now? Yes, I'm gonna share and then let me know how is it visible to you. Yeah.
Okay, so anyone of you, if have any queries, you can directly send us, directly chat with us, like send us on our the co-host and host. And also we are live at Facebook, so you can send your queries in the live chat over there. So yeah, if you have any queries, you can directly send us in the chat box. It's private now. Hello, Assalamu alaikum. Walaikum assalam, sir. Ji Nikeeta, should we start? Yes, sir. पहले हम थोड़ा intro करेंगे SAP का, फिर आपको hand over करेंगे. So we Okay, are going to start. okay, thank you. Okay. Start. Okay. This is Sorath Mustafa Dahri as a host, and we have a co-host Nikeeta, and today we have as a guest speaker, assistant professor, community dentistry and research expert, Dr. Sikander Memon. Assalamu alaikum, sir. And here we are from the Study Aid Project team, and Study Aid Project team aim is to address prevailing educational problems and to develop a healthy educational system. With this motive by the students for the students, Study Aid Project team have facilitated students in their curricular and co-curricular activities through different projects. Like I'm gonna mention, the Study Aid Project team publishes its own bi-monthly magazine named Tajdeed, and Study Aid Project team organizes variety of events like talent award ceremonies, Teachers Day, Women's Day, book fairs, workshops, awareness walks, and tableaus, and much more. Okay, and right now the Study Aid Project team is working on Resource Center project with the motive to provide guidance to students by qualified teachers by providing the study guide booklets. Study Aid Project have its own lending library, and it conducts the career counseling sessions, subject-wise webinars, and today we have the most important webinar, the research webinar for medical students with the alumni of LUMHS and a research expert, Dr. Sikander. Your all queries will be invited and answered by sir at the end of the session. So over to you, sir, and welcome. Thank you, Nikeeta. My screen is shared. Can I start now? Okay. Can you see the PowerPoint now, everyone? Yes, sir. Okay, Assalamu alaikum. Actually, I'm not going to start it on advanced level. Actually, this presentation I have prepared only for undergraduate students, mostly the students who are going through their first year, second year, fourth year, or even final year, or even the non-MBBS students as well. So this whole presentation will help you to understand the basic and the main process of research, how you are supposed to start with the research, how you are supposed to design your proposal, and then proceed with data collection, ethical approval, data collection, and then your thesis write-up and or manuscript or research article publication. So what are the learning objectives of today's presentations? That include research benefits from academic and career point of view. What is research at undergraduate level? Research as part of your curriculum means lectures. Why is research important as undergraduate students? How to conduct research? What are the main research components? And publication of articles. How to select a target journal to publish your article. Yes, Ramesh, you want to ask something or you have anything to ask? Okay. So
Research at undergraduate level. What you guys are supposed to do, or you are being asked to do, first of all, research is also part of your curriculum. Means if you are even from semester system or annual system, or from the newer version of modular system, you are supposed to be taught, to be to learn academic writing, biostatistics, which also include SPSS, or research methodology. These are three subjects which are included in your intermodular modular system, and we have already started in MBBS and BGS, and also it has proceed to second year of modular system as well. So there are three subjects. We will discuss those one. Then, as an undergraduate students, you can also participate and register in. There are different specifically designed workshops for undergraduates to learn all the basic skills of research. Then there are already ongoing research projects. You can also become the part of those research projects. Then research is part of curriculum or lectures. Excuse me, just a minute. Sorry. Okay, research is a part of your curriculum. What are three subjects you are supposed to be having? These three subjects. First one is basic research methodology, then basic biostats, including SPSS and academic writing. These are three subjects. In research methodology, you will be learning what are the study designs, how to calculate the sample size, different types of research, etc. And then in biostats, you will also learn what are the basic statistical, softwares or the techniques, and you will also learn a hands-on software that is called SPSS. This SPSS is a statistical package for social sciences. Actually, this software is used for data analysis. So whenever you are collecting the data, that is always in raw form. To analyze the data, to bring it into some learning, phase, you have to analyze the data, and for the analysis, you have to get the help of SPSS. And then academic writing, how you will write academic from academic point of view. And what are the research workshops which we offer at undergraduate level from the platform of Medical Research Center, which is also situated at LUMHS University. So these are actually few research workshops which we offer. You can also register. You can go through the website of LUMHS. You can just search ORIC LUMHS or MRC LUMHS, and on that you can find a page for undergraduate. And on that page you will have a registration form. You can just download the form and you can register for any of these workshops. I will suggest to enroll all of these workshops to understand all the basic skills of research. First of all, you have to learn how to write project. Once you know how to write project, you will discuss with your supervisor. Then there is another workshop for research methodology. Their fees is very negligible, 500 to 1000. You can just enroll in those programs. You will learn the basics. You will have certificates. You can also add those certificates into your CV, and it is also going to help you in your future endeavors. And then SPSS, and then Mendeley and EndNote. These are two reference management softwares which can also help you to write your own introduction, discussion, literature review, the main component of your research. And then there is manuscript writing. Means in the end, at the end, when you are done with your all data collection and writing things, you are supposed to publish one research article. You must know that recently from the Advanced Studies Board of LUMHS University, the resolution was passed. So now every undergraduate and postgraduate students, they will not get their degree until and unless they will publish one article, preferably a W category article, which is an impact factor article, and at least Y or X category for postgraduates. And for undergraduate, if you go for Y category, it will be okay. You will have your degree, and as well as you, as an honorary reward, you will also have a diploma in research. That will be an honorary degree you will get. So I will again
say you must enroll in all of these workshops to understand the basics, because in future, when you need all these things, you won't have the time to enroll. Then you, when you once you are pass out from this university, you won't have time to come back and again join these workshops. So I will highly suggest at this moment, at this phase where you are as undergraduate, you are coming every day to this university, let's go through these workshops. And then what is research? The first question is research. Most of the students, they think that research is like a actually in our community, research is a taboo. It's not that difficult. We all are researchers. As I have always given examples that whenever you have any problem, you are watching some movies, you are having some whatever you see something different or new, you try to find out more details about that thing. So when you look at any problem, you feel this is a thing which I need to know more about that particular thing. It is become your problem. To solve that problem, you start doing research. You start collecting data about that particular thing. So it's very simple process. From definition point of view, it is a journey from known to unknown. Research is a systematic and rigorous process of inquiry that aims to describe, process, and develop explanatory concepts and theories in order to contribute to a scientific body of knowledge. In simple terms, when you are doing any search, it will be again and again and again, it will become your research. So what is the basic difference between a clinician and a clinical scientist? A physician, uh, a surgeon, and a epidemiologist or a clinical scientist. Actually, a clinician basically only treats a diseased patient. On the contrary, a clinical scientist diagnose the whole disease, understand and read the whole disease, and try to find out the solution to fix that problem or to treat the whole disease itself. From sometimes they collect the burden of the disease from the community to read in at even more detailed form, and then they try to find out the problem of that particular study. At this moment, we recently we had a breakout of COVID, so you must know how clinical scientists they helped. Although clinicians were helping and they were treating all those patients symptomatically, but who coped with this whole COVID situation? The clinical scientists. They found out, they studied first, they studied this whole virus thing, and then they provided, they reached up to the limit where they provided us with the different forms of preventive measures. Even today we have vaccination. So this is all because of the clinical scientists. Then, what are the main component of research? First, you must know what is the name of the problem or the topic or the title. Once you are done with your title, means even title should be very smart. A title should be a self-explanatory thing. When you are reading a title, from only from title, peer reviewer or the audience must understand what your study is about, what your research is about. So first of all, title, and then introduction and literature review. What you are supposed to write in introduction and literature review. For example, you are an undergraduate student, second year, third year, fourth year, or even final year. You are visiting some OPDs or wards. You come across with a problem. You come across with a different type of problem which you want to solve it. You are observing something and you want to solve that specific problem. What you will do? You will try to collect more information about that particular problem. You will review the literature. You will discuss with your supervisors, with your teachers, that what this problem is about, how can we deal with this specific problem. And if you want to conduct research on that particular topic, that is again you are trying to solve that problem, that is means you want to do the research on that particular topic. So once you have finalized your title, then you are supposed to write introduction for that particular topic. And in introduction, first you have to introduce the facts and the figures of that particular problem, if there is a disease.
You have to give the incidence or prevalence of that, how many people are dying, what is the mortality rate, what are the infection rate. Means you have to introduce what are the dangerous thing, or what are the breakout, the alarming thing about that, a specific disease or the topic or the statement of the problem. Then the second thing, you have to provide some kind of rational means what is the significance of doing this study. So first you will give the introduction of that particular problem, then for 2 to 3 paragraph will be for literature review, and then you will go for rational, and then you in the last you have to provide one objective, study objective, along with your aims and goals, and you have to provide one objective. The third thing is methodology. Now these two things, introduction and literature review and methodology. Once you are done with these two things, 2 chapters, introduction and methodology, means you have completed your research proposal. Now, what are the component of methodology? First of all, what do you mean by methodology? This is actually all the things and all the questions you are going to answer. For example, what will be the study design? Is it going to be an experimental study, means interventional study, or is it going to be an observational study? The second thing, you will tell where you are supposed to conduct this study. You are conducting this study on at some community level, in some ward, at OPD level, in some university, or anywhere you are doing. You have to provide that is called a study setting. Then you have to provide the study sampling technique, means how you are supposed to select the study participants or the subjects or the volunteers or the study people who are going to be individuals who are going to be included in this study. That is called sampling technique, how you are going to select those study subjects. There are 2 types of actually sampling technique. Those first one is probability sampling technique. There are again 5 types of probability sampling technique, and there are non-probability sampling technique. Once we have got the chance, I'll give a detailed lecture on the research methodology separately to understand each component in detail. We'll discuss each component in detail. Then inclusion and exclusion criteria, means what are the main what kind of individuals will be included in the study, and what are the subjects which are going to be excluded from the study. Then you have to provide the sample size, means how many subjects you are going to select for your study. Then you have to give the data collection procedure, means how you will collect the data from informed consent to data analysis. Okay. And then at the last, you will give your data analysis plan, means how you will analyze the data. So once you are done with these 3 things, title, introduction, obligatory review, and methodology, it will become your research proposal. If you are at undergraduate level, it will become your research proposal. But the same thing, if you are enrolled in some postgraduate program, then these 3 chapters things will become your synopsis. So synopsis and research proposal, actually these are same thing. These are synonyms. But if you are doing for some postgraduate qualification degree program, then it will become your synopsis. But if you are doing if you are a faculty of any university, or you are conducting any independent research or at undergraduate level, then it will become your research proposal. So what are the 3 components of research proposal? Your title, your introduction and literature review, and your methodology. Once you are done, you have discussed these all things with your supervisor. They are agreed on every single thing, all the components. Then you will proceed for REC. REC stands for Research Ethics Committee. Actually, this is a committee for every university or for every institution. They have their own research ethical committee, which ethically review whole proposal or the synopsis. Means if your study includes some human beings or some type of procedures which can harm any human being or any lives or living beings or the living objects, so they are supposed to review it ethically. Once your ethical research proposal or synopsis is approved from the research ethics committee, they will provide you one ethical approval letter. Means now your research proposal is
ethically approved. So you can proceed for data collection. Many students came to me and come to me most of the time. They said that, sir, we have this questionnaire and we are just want to collect the data, or we are already collecting data on some particular topic and we want to publish our study. This is not the proper way. So if you want to collect data, you have to first, go through these all procedures. Okay, so you have to, these are the main component and stepwise process of doing research. For data collection, you have to finalize your title first, introduction, methodology. This become your research synopsis or proposal. Then you will proceed for research ethics committee. Even for undergraduate level, there is actually a pro forma. You can also download from LUMHS University website, or you can collect it from postgraduate department. There is this pro forma is actually like filling the blanks. Once you are done with your synopsis, you just copy all the components which are written in your proposal, and you will copy paste in the grant form, the REC grant form, okay, the ethical approval form. So you will fill that form, you will submit that form at ethical committee department, and then they will approve, they will review, they will after review they will approve this synopsis, and they will provide you one letter, hard copy of your uh, uh, approval letter. Then you will proceed for your data collection. Then once you have received your ethical approval, then you will go for data collection. Now for data collection, you must have a data collection tool. That could be your proforma. Okay, that could be your proforma or your questionnaire. It could be an interview based study, it could be an interventional study. So it depends. Every study design have a different study designs, different data collection tools. So once you have collected your data, now this data is in raw form. This is a raw information. For analysis, you have to submit that all data you have to enter into SPSS. Now, what is SPSS? Again, SPSS is a statistical package for social sciences. This is a software. We provide hands-on of this software to learn the basics and at all till advanced level. How you are supposed to enter the data, analyze the data, make your tabular forms in graphical form, pie chart, bar chart, histogram, and all these chi-square tests, the student t-test, the paired sample t-test, all these kind of tests you can apply in that particular software. Then once you are done with your SPSS, once you are done with your data analysis, you will have the interpretation. You will write the interpretation of that results. That will become your third or fourth chapter for thesis. Okay. Then once you are done with your results, you have presented your results into bar chart, pie chart, histogram, tabular form, numerical form. Then you will have to compare those results with the results on the same topic. The studies have been conducted on the same topics by international and national authors. You will discuss your results and compare your results with national and international studies. This will become your fifth chapter, that is called discussion. And then in the last, you will have conclusion. Conclusion chapter could be of one line, one sentence, it could be one paragraph, it could be one page. So it depends on the objectives. In the last, you will have your references. Actually, for references, you also have to provide references when you are writing your research proposal. Means when you are writing your introduction, means literature review, you will also provide your references here. So once you are done with all these things, this will become your thesis or dissertation. This is same thing, thesis and dissertation. Okay. From that thesis or dissertation, you will extract one research article for publication. Now, it's not necessary that if you are at undergraduate level, you must write one thesis. You can skip the process of writing thesis. You can directly proceed to research article. Once you have done with your data collection, you just enter the data into SPSS, analyze, get your results, present it, and you don't need to write full chapter for your thesis. You can just proceed for your research article. Now, you cannot call it a research article until and unless it is published. So what you will call it? For at this phase or level, stage, this will be known as manuscript.
Why? Because it is not yet published. Once your manuscript is between the correspondence with your editorial board of the journal and you, this will be known as your manuscript. Once it is published, it is online, then you can also then and only then you will be able to call it as research article. Okay, so this is actually journal basic stage. These were the basic steps. Okay, these are the stages of your research process. Now, first of all, you generate a research question or a theory or a statement of the problem. Then you will select appropriate design. Once you have your study design, you are going to do some observational study or experimental study. Then and only then you will proceed for collection of appropriate data, which I have already told you. Before collection of data, you have to get ethical approval from research ethics committee. Once you are done with your data, you will analyze your data and SPSS, and you can present your data or results. That is called research article. So this is a circular process. You can just this is actually the backbone of any research project. These all stages. Okay. Once you are done with your thesis or you have already prepared your manuscript, now how you are going to publish their article? First of all, many in clinicians or the researchers, what they make mistakes are they don't know how to select a proper target journal. They don't know where to publish their articles. They always make mistake and they publish in journals which are not HEC recognized. And when they are applying for some promotion or they are applying for some internship or scholarship, those articles, then they found that those articles are not affiliated from any particular authority or any recognized system. So how you are supposed to select a journal once you are done with all data collection and research thing, you have prepared your manuscript. Now the second phase will start to find to select target journal. So for that thing, I'll tell you the very basics. First of all, you have to Google HJRS. It is actually HEC, Higher Education Commission Journal Recognition System. What you have to do is you just Google HJRS in Google and you will have this. Let me give you a live demonstration for that thing. You will just Google it. Okay. In Google, you will write HJRS, enter, and you will have this HJRS. Okay. Then on HJRS, you will click on. You will open this website. Once you have opened this website, now it depends from which field or discipline you are belongs to. For example, if you are from MBBS side or you are from BDS, pharmacy or biomedical engineering or TPT or any discipline, you will find the journal according to your discipline wise search. So you will click on discipline wise search. Now you can select from the area which area you are targeting. For example, if you are from arts and human sciences, agricultural sciences, biological and health sciences, which we as a medical students are, or you can select the any respective field from here. So you will select if you are a medical student, biological and health sciences as your area. Then what will be your subject area? Again depends on, for example, if you are belong to medicine, if you are belong to dentistry, if you are belong to surgery, you have to select your specific subject area. After that, all subject categories of the selected area or as any specific. For example, if you are belong to any particular discipline, you can also find specific journals. Okay, so medicine, miscellaneous, and then in the last, it depends now which category is being targeted. W category is an impact factor journal. All the journals which are impact factor data, those are known as W category journals. Okay, and then X category journal, they also have sometimes impact, but they are not higher categorized journals. So from ascending to descending order, W category is means impact factor.
Then lower than W category is X category, and then the lowest form is Y category journal. So you have to select any category. If there is no any limitation for the category, you will just select all the categories. Okay, and then you will select just refresh. Once you will refresh, you will have all those journals which are from biological sciences, medicine, and so you will just select any journal you are targeting from here. Okay, you can also find journal if you are also targeting journal. Let's say if you are targeting Liaquat University of Medical Health and JLUMS. Okay, so you will just write Liaquat, and you can see this journal. It is also recommended, affiliated, and it is in Y category. So you want to see the more, you want to get know the more detail about that particular journal, you will just select that journal and find more details. Now you can see Journal of Liaquat University of Medical and Health Sciences has ISSN number, the country which it belongs to. It is also under the list of Scopus journals. It is also in the list of Web of Science. The subject area is medicine and miscellaneous. Subject area, we have also this CD2 is actually impact factor of any journal. So we have 0.19, although it is a raw score, and you are not supposed to target any Y journal. From preferably, you should go for X category or W category, and this is in the Y category. So these are actually some, you can say that, calculating method on which this is a JPI 12 and it's under Y category. Medallion is null and subject area position is written here. Okay, so you can also find journal from the journal's name directly, or if you have just ISSN number, let's say of any journal, you can click on ISSN. You can see, you can find with that specific journal as well. Okay, so once you have done with your targeted journal, that this is the journal where you want to publish your article. Now once you have finalized your journal, you will go to the website of that particular journal. I have selected this journal's name from this website, and now I have copied it and pasted in Google. So here I have the JLUMHS website. Okay, so I will click on that JLUMHS or any targeted journal. You will go to that specific website of that specific journal for the instructions of authors. Now every journal or the publishing organization or the institute have their own different form of publication method. They will provide you this. This is called actually instructions to authors. I hope you all are following me. So instructions to authors. All of you, I hope you can see this whole thing, that aims and objectives. These are the international and national, their editorial policy. From here, you will follow the instructions. So how you are supposed to prepare your manuscript. Now, once you have already raw draft your manuscript with you, okay, now you will follow the instructions which are being given by your targeted journal. Those are, they are saying that your text for original article should not exceed 3000 words and all the details. Okay, then what should be the style of your manuscript? Here they will tell you what are the basic things, what is the spacing, style, pagination, page number, how you are supposed to use the page number, Arial size should be 12, double spaced, and every single thing. Then they will tell you how you have to prepare your title page. Title page should be double spaced. It should be within 16 to 12 words. Title should not exceed 16 to 18 words. What are the names, authors, department of that particular author, and the institution which they belongs to or affiliated to, etc., etc. Your phone number, your WhatsApp number, your email ID, your fax, if there is any, all the details you have to provide here. Then they will tell you to write down one structured abstract. Actually, there are two types of abstracts: structured abstracts and non-structured abstracts. Structured abstracts are those where you provide the subheadings as well. So these are the subheadings. Okay, following format should be adopted for original articles. Okay, these are the basic things.
And then your introduction, methodology, results, discussion, conclusion. You should provide some recommendation. If there is any acknowledgement, you have got the help of any organization or department or the even technicians. Internationally, they appreciate if you are acknowledging something. But unfortunately, in our country, when we acknowledge somebody, we feel embarrassment. Why we are acknowledging them? This is a wrong practice. We should always acknowledge whoever is going to help you in your project, even if it's a technician who is going to help you, even if it's a phlebotomist who is helping you during blood drawing collection. All people should be acknowledged. Okay, or if there is any laboratory or if there is any ward in charge, the colleagues, every single person should be acknowledged, whoever is going to help you in your research project. And in the last, if there is any conflict of interest, you have to write down. If there is no any conflict of interest, you have to write down there is no conflict of interest is declared. Okay. So informed consent, if there is any human beings are involved, you have to take the informed consent signed during the data collection. And you have also, if they are asking, you have to provide that informed consent as well. Then if there are human and animal rights, you have to, and it's a trial, it's a randomized controlled trial study, you have to provide the certification and registration number of that trial as well. If there is any funding you have received from any institution or any, for example, for my PhD, I was funded, I expected 1 million from LUMHS University. So my study was funded from LUMHS University for PhD program. For different, we have scientists, for example, Professor Dr. Binafsha Manzu says she has the highest uh, grants at the moment at our university. Then Sir Professor Ali Mohammad Maria Saab, and then our Vice Chancellor Professor Ikramdin Ujjan Saab. They are very highly funded people. They have received from NRPU, National Higher Education Recognition, Higher Education Commission. They have received the funds for different their own projects. These are their private personal projects for them. They are highly patentable projects, and groundbreaking research they are doing. So they have received these kind of grants from these. There are many actually funding agencies. You can get grant from Higher Education Commission. You can get which is called NRPU as well. There is PHRC. Recently, they have changed the name HRC, Higher Health Research Council. And there is PSF, Pakistan Science Foundation. You can even get funding or grant from international organization. There are Melinda Bill Gates Foundation and many others. So it depends what kind of funding you need. Even governmental and not governmental organizations, they can help you. You can help from PSO. You can help get funding from any organization at all. And in the last, you need to provide the references for all the things you have written in your article or your manuscript or your proposal or your thesis. For that, I always encourage to learn a Mendeley. I am also a country advisor of that specific software which help you in reference management. Then illustration and legends, your tables, your graphs, your measurements, case report, and what type of article you are writing. Is it a review article, original research article, case report, case series? It depends. And these are the different remaining, instructions regarding any specific component if you are. And there are publication charges as well. For each journal, you will find processing charges. Now, this is written in the last, at the last, but I will encourage you and I will suggest and recommend you whenever you are publishing in any journal, whenever you are targeting any journal, first of all, go for the processing fees. What are the publication fees of that specific journal? If you can afford that particular fee, then and only then you can proceed for instructions to others. And you also check this whole checklist that all of these things are already along with you or not. For example, covering letter, your undertaking and copyright, your ethical pro forma, which I have told you that you cannot publish your article until and unless you have ERC, ethical review committee permission or ethical approval letter. And these all things which you will follow accordingly. So this is how you are, once you are done with manuscript writing, then you will
submit your article. There are two ways of submitting your article. Once you have followed all the instructions of any journal, either you have to submit through online submission process, or you can directly email to the editor of their specific journal. So these are actually two things which you can follow in your So this was how to select in target journal. I told you whole demonstration, a live demonstration was there, and then these are the steps you have to follow. And in the last, follow the instructions to authors, submit the manuscript through online system, or email the manuscript to the editor of the targeted journal. So that's all, guys. Now I'm here to ask you the questions. If you have any questions, you are most welcome to ask, please. Yes. Okay, so we are making the chat public now, and Yes. you guys can ask any queries if you have. Yes, yes, please. Also raise hands so we can unmute you if you have any queries, dear participants. Okay, so if your mic is not working, even though you can write your question in the chat box. Yes, Sumaira. Yeah. Sumaira, you can ask the question. Assalamualaikum. Can you hear me clearly? Yes, I can hear you clearly. Yes. Assalamualaikum डॉक्टर सिकंदर. फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन है, बहुत नॉलेजेबल प्रेजेंटेशन है, और अंडर ग्रेजुएट्स के लिए तो बहुत ही अच्छी है, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो पोस्ट ग्रेजुएट के लिए भी अच्छी हैं. इवन जो आपने HEC बताया वो अभी भी बहुत सारे लोगों को, अगर हम देखें अपनी कम्युनिटी में ही मेडिकल में, तो लोगों को नहीं मालूम, और ये बहुत वैलिड है. और थैंक यू सो मच. मुझे सिर्फ एक चीज़ ये पूछनी थी कि वो भी सिर्फ मुझे लगता है कि कुछ अंडर ग्रेजुएट्स के लेवल से भी, क्योंकि हम जब भी कोई स्टूडेंट आर्टिकल पब्लिश करता है फर्स्ट टाइम, ऑब्वियसली वो अपने सुपरवाइजर्स के साथ करता है, लेकिन समटाइम्स कभी ऐसा होता है कि वहां से आपकी फॉर एग्जांपल जो है वो रिजेक्शन आ जाती है. तो नीचे एक लाइन, जब हम नए आर्टिकल्स जब हम खोलते हैं, उनकी सारी हम चीजें पढ़ते हैं, तो उसमें लिखा होता है कि आप कहीं से रिजेक्ट हुआ हो तो आप हमें बताएं. सेकेंड बात ये कि जब हम उसको दोबारा से कहीं और सबमिट करते हैं, तो क्या हमें उसको पूरा बताएं कि हमारा ये रिजेक्ट हुआ था, किस तरह से उसको हम करें कि वो हमारा आर्टिकल दोबारा से फिर कहीं पब्लिश हो जाए. क्योंकि सब आर्टिकल्स के अपने कैटेगरीज लेवल्स होते हैं. कोई बहुत ज्यादा कुछ जो होते हैं वो आजकल सिर्फ प्रेवलेंस पर ही अभी भी पब्लिश कर रहे हैं, कुछ इतनी ज्यादा आगे निकल गए जेनेटिक या कल्चर बेसिस पे कि वो फिर प्रेवलेंस के आर्टिकल्स को कंसिडर नहीं करते. तो रिजेक्शन में अगर बाय चांस चला जाता है तो फिर हमें क्या नेक्स्ट स्टेप उठाना चाहिए? थैंक यू उष्माला, आई अंडरस्टूड योर क्वेश्चन. एक्चुअली देखें, मैं दूसरे लोगों को भी थोड़ा समझाना चाहता हूँ कि मैडम का एक्चुअली क्वेश्चन ये था कि फॉर एग्जांपल आपने अपना एक आर्टिकल कहीं पे पब्लिशिंग के लिए भेजा किसी भी जर्नल के अंदर, और वो वहां से ड्यू टू एनी रीजन रिजेक्ट हो जाता है. हाउ डू प्रोसीड, मींस अब आप क्या करेंगे कि मतलब किसी और जर्नल में अगर भेज रहे हैं तो उनको बताना है कि हमारा आर्टिकल फला जर्नल में रिजेक्टेड हो चुका था, या नहीं बताना, या क्या करना है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट हैपेंस व्हेन यू आर सबमिटिंग इन एनी जर्नल, why it is being rejected? The first question is that it should not be rejected on the basis of your research. So उसके लिए सबसे बेस्ट जो बात है ना वो ये है कि सबसे पहले जिस भी जर्नल को आप टारगेट कर रहे हैं ना, सबसे पहले उसका स्कोप ऑफ द जर्नल देखें. वो उसका स्कोप क्या है. फॉर एग्जांपल अगर एक डेंटिस्ट्री का जर्नल है और उसमें अगर आप एक हेमेटोलॉजी से रिलेटेड आर्टिकल भेजेंगे, ऑफ कोर्स दे आर गोइंग टू रिजेक्ट इट, दे आर नॉट गोइंग टू एंटरटेन यू. ऑल्दो However, अगर आपने उस जर्नल में भेजा है और आपने उस जर्नल की स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस टू ऑथर्स को फॉलो नहीं किया, फॉर एग्जांपल वो कह रहे हैं कि आपको जो एब्स्ट्रैक्ट बनाना है वो इस तरह से होना चाहिए, इतने नंबर वर्ड्स और वर्ड लिमिट्स इतनी होनी चाहिए, आपका स्टडी डिजाइन जो है इस तरह का होना चाहिए. वो अगर फॉर एग्जांपल कह रहे हैं कि आपका
पूरा जो मैन्युस्क्रिप्ट है वो इस इन नंबर्स ऑफ वर्ड्स को एक्सीड नहीं करे। आपके रेफरेंसेस स्टाइल्स में गलतियां होती हैं, वो अगर आप कोई मैन्युअली आप अगर फॉर एग्जांपल रेफरेंसेस दे रहे हैं उसमें गलतियां आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल इफ यू आर even after following all the instructions, there are sometimes chances that they will provide you some comments or objections. So you are not supposed to be discouraged or discouraged, feel discouragement with this thing. What you have to do when once देखें आपका जो आर्टिकल होता है ना वो जाता है रिव्यूअर्स के पास। रिव्यूअर्स जो थे वो उस स्पेसिफिक फील्ड का जो आपका टाइटल होता है उससे रिलेटेड उसके एक्सपर्ट्स होते हैं। तो वो हमेशा क्या करते हैं, वो आपको जो भी कमेंट्स देते हैं ना, उन कमेंट्स को जब आप एड्रेस करते हैं उनके उनके एज पर इंस्ट्रक्शंस टू रिव्यूअर्स, जब आप उसमें मॉडिफिकेशंस करते हैं तो आपका आर्टिकल जो होता है ना वो और ज्यादा इंप्रूव हो जाता है, उसमें गलतियां और ज्यादा कम हो जाती हैं। ठीक है, तो फर्स्ट तो आप क्या करते हैं कि उसी सेम जर्नल में अकॉर्डिंग टू जो भी वो आपको ऑब्जेक्ट्स लगा के देते हैं उनको आप एड्रेस करके वो सारी चेंजेस करके फिर से दोबारा उनको वापस भेजते हैं। कभी कभार 2 दफा, कभी कभी इवन 4-5 दफा भी आपको कॉरेस्पॉन्डेंस के दौरान, यही तो कॉरेस्पॉन्डेंस होती है बिटवीन जर्नल एंड कॉरेस्पॉन्डिंग ऑथर, कि वो जर्नल जो होता है वो जब भी आप उसको आर्टिकल भेजते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करता है वो रिव्यूअर्स के पास भेजता है। रिव्यूअर्स अपने कमेंट्स लगाकर उनको देते हैं कि भाई इसमें ये चीजें होनी चाहिए, या इसने अच्छी की हैं या नहीं करनी चाहिए थी या करनी चाहिए थी, जो भी उनके कमेंट्स होते हैं। रिव्यूअर्स क्या, सॉरी, जो एडिटोरियल बोर्ड होता है वो क्या करता है, वो रिव्यूअर्स के कमेंट्स वहां से लेकर फिर आपको दे देता है कि भाई आप रिव्यूअर्स ने जो है ये कमेंट लगाए हैं, काइंडली आप इनको एड्रेस करके फिर हमें दें। फिर आप क्या करते हैं, उन रेफरेंस उन सारे करेक्शंस को फिर चेक करते हैं, ऑब्जेक्शंस को या कमेंट्स को, फिर आप वापस भेजते हैं जर्नल को। फिर जर्नल देखता है हाँ अब इसने वो सारी चीजें जो एक रिव्यूअर ने इसको कही थी उसने इसमें इंसर्ट की है, इनपुट किया है या नहीं किया। फिर वो वापस उसी जो रिव्यूअर होता है उसको वापस भेजता है करेक्टेड फॉर्म में कि भाई अब इस जो करेस्पॉन्डिंग ऑथर है उसने ये सारी करेक्शंस की हैं और उसने भेजा है। फिर वो रिव्यूअर देखता है हाँ अब ओके है, तो फिर वो क्या करते हैं, वो जर्नल के जो एडिटर होते हैं उसको ग्रीन सिग्नल दे देते हैं कि यू कैन गो फॉर पब्लिकेशन। तो वो आपको एक एक्सेप्टेंस लेटर भेज देते हैं। ये तो हुआ एक अच्छा मामला। वर्स्ट केस सिनेरियो क्या होता है, वो ऑन द स्पॉट रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, जब ऑन द स्पॉट रिजेक्ट कर देते हैं और विदाउट एनी जो है वो कर देते हैं जब किसी कमेंट्स के या क्या, तो इसका तो मतलब ये है कि यू हैव नॉट फॉलोड द scope of that journal, or that journal is you are not, your weightage of your article is not up to the limit of that particular journal। ठीक है, और अगर जो करेक्शंस हुई उसके बाद भी वो रिजेक्ट करते हैं तो यू आर नॉट सपोज टू बी डिस्करेज्ड। आपने क्या करना है, फिर से स्टार्ट करना है, फिर एक और जर्नल आप फाइंड आउट करेंगे ऑन द सेम टॉपिक। अब आपने क्या करेंगे, अब आपका ज्यादा इम्प्रूव फॉर्म में होता है आर्टिकल, क्योंकि जब प्रीवियस जर्नल में आपने भेजा था आपको कमेंट्स आए, आपने वो सारी कमेंट्स जो है उनको एड्रेस किया, इम्प्रूव किया। नाउ यू हैव सबमिटेड योर सेम आर्टिकल इनटू न्यू जर्नल, तो उसमें वो ज्यादा इम्प्रूव फॉर्म में जब होता है तो बहुत कम चांसेस होते हैं रिजेक्ट होने के। तो वहां से इवेंचुअली फिर आपका जो आर्टिकल होता है वो एक्सेप्ट हो जाता है मोस्ट प्रोबेबली। आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। Sir, another question. Yes. पहला आपको Sir, क्वेश्चन है? you can ask the question which we have been given in the Okay. chat box. Yeah. Sir, Yes, another question is from a student. Can we send an abstract to the editor to know if he is interested in our work? देखिए एब्स्ट्रैक्ट जो होता है ना, यू आर नॉट सपोज टू सेंड एब्स्ट्रैक्ट टू एनी जर्नल until and unless they are asking for abstract specifically. Abstracts are for conferences. You only send your abstract to the conferences, okay? But yes, sometimes the authors even they ask you to send journals, they ask you to send the manuscript, abstract. But whenever you are sending any article for the with the intention of publication of that particular article into any specific targeted journal, you have to follow the all instructions provided by that specific journal. Only and only then you are supposed to send the article for publication. Okay. Okay, sir. We have another question from a student. Yes. Please again name the website from where that proforma can be downloaded and filled so that it can be presented before RDC. Sir, website के नाम?
लम्स की वेबसाइट से आपको मिल जाएगा। लम्स यूनिवर्सिटी आप गूगल करेंगे, यू विल फाइंड इट फ्रॉम देयर। और इवन मैं अपना आपको ईमेल एड्रेस दे देता हूँ, ठीक है, बल्कि आप नोट कर लें मेरा ईमेल एड्रेस मैं यहाँ पे चैट में लिख सकता हूँ, इफ एवरीबॉडी कैन सी दिस। drsikander.memon@lumps.edu.pk, everybody can see this, right? ये मेरा ईमेल एड्रेस है। अगर आप लोगों को ग्रांट फॉर्म सॉरी एथिकल अप्रूवल फॉर्म नहीं मिलता है, आप डायरेक्ट मुझे ईमेल करें, मैं आपको उसी टाइम पे इसकी जो है वो सॉफ्ट कॉपी भेज दूंगा, नो बिग डील। Okay, sir. Sir, it will be great that if you mention the websites for literature review. देखें Literature अब review. या एक्चुअली व्हाट हैपेंस, देखें देयर आर 3 डेटाबेस, ठीक है, मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। एक सेकंड, लेट मी शेयर द स्क्रीन फर्स्ट। Okay, so once there are actually 3 websites where you can review your literature, you can find all the research articles, okay? सबसे पहली होती है PubMed। आप इसमें PubMed ये जब लिखेंगे गूगल में, you will find this website PubMed। आपने इसको क्लिक किया, will be open। Now here you can find out all the articles, for example if these are related to cancer treatment, just sorry, okay, lung cancer for example, so you will just click all the articles. Now you can see here you have the text availability. You don't have access, for example full access, so you will just click on free full text here. Now all the articles, whichever article you will click on, it will be free to download, it will be free to read whole article, okay? So you can just click on here. So you can find whole article here, okay? इस तरह से आप लिटरेचर सर्च कर सकते हैं या पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। एक ये वेबसाइट है पबमेड, उसके अलावा सबसे जो मशहूर जमाना हमारे पास है गूगल स्कॉलर। तो आप गूगल स्कॉलर पे क्लिक कर लेंगे। गूगल स्कॉलर में भी आप किसी भी आर्टिकल को ढूंढना चाहते हैं और तो यू विल हैव ऑल दिस वन। अब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास डायरेक्ट पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। लास्ट 5 ईयर्स से चाहिए, रिसेंट चाहिए, लेटेस्ट चाहिए, फ्रॉम एनी टाइम चाहिए, यू कैन फाइंड देम हियर। दूसरी ये वेबसाइट है पबमेड, गूगल स्कॉलर, और तीसरी हमारे पास होती है साइंस डायरेक्ट, ठीक है। तो यहाँ ये साइंस डायरेक्ट से भी आप आर्टिकल्स को पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, जो एक्सेस है वो आप देख सकते हैं उनको भी। यहाँ पे कीवर्ड्स आप लिखेंगे आर्टिकल्स के, फॉर एग्जांपल कैंसर, ठीक है, एंटर करेंगे एंड यू विल हैव ऑल द आर्टिकल रिलेटेड टू ओरल कैंसर, ठीक है। अब यहाँ पे भी आपके पास ऑप्शंस हैं, आप चाहे तो सबसे जो इवन लेटेस्ट है, कौन सा टाइप चाहिए आपको, आर्टिकल रिव्यू आर्टिकल्स चाहिए, आपको बुक चैप्टर्स चाहिए, रिसर्च आर्टिकल्स चाहिए, और उस पर भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट एरिया से रिलेटेड चाहिए, यू जस्ट क्लिक देम एंड नैरो डाउन द सर्च, ठीक है। तीसरी भी वेबसाइट है वेब ऑफ साइंस के नाम से, इससे हम ISI वेब ऑफ साइंस भी कहते हैं। ये थोड़ा सा आपके लेवल से ऊपर की बात होगी, तो आई विल आस्क यू टू जस्ट गो फॉर गूगल स्कॉलर, पबमेड एंड साइंस डायरेक्ट, ठीक है। तो ये 3 वेबसाइट है, यहाँ से आप अपना पूरा आर्टिकल्स जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं और अपने लिटरेचर को जो है वो रिव्यू कर सकते हैं, any topic at all. Yes, any other questions? Okay, if anyone have more queries, please do ask. Yes, Sumaira, please unmute yourself. डॉक्टर सिकंदर, मेरा क्वेश्चन ये है कि हम जैसे आर्टिकल्स पब्लिश स्टूडेंट्स को करवाते हैं, तो ऑब्वियसली हमारी जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश नहीं है। आपको आवाज आ रही है सर?
Yes, I can hear you. हाँ डॉक्टर सिकंदर, हाँ डॉक्टर सिकंदर, स्टूडेंट्स आते हैं हमारे पास, वो कहते हैं कि जाहिर सी बात है, और अक्सर आर्टिकल्स जब हम देखते हैं जर्नल्स में तो उसमें लिखा होता है कि आपकी ये लैंग्वेज नहीं है तो आप जो है, और वो एक कभी कभी कोई वेबसाइट दे देते हैं कि आप इससे अप्रूव लें। अब अगर हम उन वेबसाइट्स पे जाते हैं इंग्लिश की उनके सर्टिफिकेट के लिए तो वो काफी एक्सपेंसिव पड़ती है स्टूडेंट्स के लिए हमारे। तो कोई वेबसाइट, कोई चीज स्टूडेंट्स के लिए कोई हेल्पफुल हो सकती है जो कि उनकी ग्रामर या किसी चीज को अप्रूव कर सके, कि या अगर अप्रूव नहीं कर सके तो एटलीस्ट उसे इम्प्रूव कर सके, ताकि उनको ये प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि अक्सर जब जर्नल्स की हम क्वेरीज सारी पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ होता है कि आप या तो इसका सर्टिफिकेट लें या आप अपनी बेसिस पे इसको जो है वो सबमिट करें मैन्युस्क्रिप्ट को। कोई वेबसाइट है जो हेल्प कर सके स्टूडेंट्स को देखिए, ग्रामर के लिए? आई गॉट योर पॉइंट। देखिए, ग्रामर के लिए, स्पेलिंग थैंक यू चेक के सर। लिए वैसे तो हमारे पास काफी अल्टरनेटिव्स हैं। ग्रामरली है एक वेबसाइट है, ठीक है, उसका जाहिर सी बात है इट्स वेरी एक्सपेंसिव, यू कैन नॉट बाय, मतलब यू कैन बाय बट इट्स वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है, टू बाय द अकाउंट। और दूसरी भी वेबसाइट है, लेकिन बेसिक्स की अगर मैं बात करूं फ्री वर्जन की, तो हम हमारे पास देखें, हम लोगों ने कभी भी माइक्रोसॉफ्ट को सही तरह से समझा ही नहीं है, ठीक है। वी आर इवन यूजिंग दिस माइक्रोसॉफ्ट वर्जन विंडोज, बट वी डोंट एक्नॉलेज दीज थिंग्स। देखें, वर्ड हमारे लिए, हम लोग पहले टाइपिंग करते थे, हमारे पास बहुत मुश्किल काम होता था, गलती हो गई फिर से नया पेज डालो, फिर से टाइपराइटर पे जब हम टक 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 करके करते थे। अभी जब हमारे पास उसने इतनी वेबसाइट फैसिलिटीज दी हैं, लेकिन हम लोग अनफॉर्चुनेटली उन चीजों को शेयर नहीं करते। मैं अभी जस्ट फॉर द स्टूडेंट्स लेवल, देखिए, आई आई हैव डिफरेंट थिंग्स, ग्रामरली है, उसके अलावा हंड्रेड्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स है व्हिच आई पर्सनली डू, ठीक है। बट फॉर अंडर ग्रेजुएट्स लेवल आई विल सजेस्ट यू, आप लोग सिर्फ गूगल में जाके गूगल डॉक्स लिखेंगे, ठीक है, गूगल डॉक्स पे आप क्लिक करें। ये गूगल डॉक्स आ गया आपके पास। इसमें आपके पास कोई भी, देखें फॉर एग्जाम्पल, अगर लिखा हुआ है आपके पास एक ऐसा सेंटेंस है, लेट्स से मैंने कहीं से भी इसको कॉपी किया, यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। जैसे मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट किया तो ये मुझे जो भी पर्टिकुलर उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होंगे वो यहीं पे मुझे बता देगा। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ पे एक ऑप्शन है स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक का, इस पे आप क्लिक करेंगे, इट विल टेल यू कि भाई ये वाला जो है इस तरह से लिखा हुआ होना चाहिए था। या जैसे कोई सेंटेंस आप पूरा ले लेते हैं तो उस पर आपको बता देगा कि भाई ये सेंटेंस जो है ये गलत लिखा हुआ है या सही लिखा हुआ है, इस तरह से। यहाँ पे आप देखें, देखिए, अब ये मैंने एक पूरा इसमें कॉपी करके पेस्ट किया है, ये मुझे बताएगा कि देखें ये है ना आर द मोस्ट, तो ये कह रहा है आर दी मोस्ट होगा। मीन्स आपको आपकी पंक्चुएशन, आपकी कॉन्शियसनेस, आपकी आर्टिकल्स, आपकी नाउन्स, टू वर्ब्स, सेंटेंस, ग्रामर, स्पेलिंग, ऑल थिंग्स इट विल सजेस्ट यू। आपने ओके किया, देन इट विल गो फॉर द नेक्स्ट वन। ये देखें सब्सटेंस, अब ये सब्सटेंस क्या बोल रहा है, एक्टिव सब्सटेंस नहीं होगा, सब्सटेंसेस होगा। तो ये हमें अब साइड इफेक्ट्स, ठीक है, और ये वेल बींग होगा। मतलब दिस इज हाउ इट विल सजेस्ट यू। तो मैन्युअली आपको देखना होगा जरूर, क्योंकि मेडिकल टेक्नोलॉजी जब हम टर्मिनोलॉजीज यूज कर रहे होते हैं, ऐसे काफी वर्ड्स होते हैं जो ये रॉन्ग दिखा रहा होता है, लेकिन वो होती नहीं है रॉन्ग। सो दिस आल्सो, दिस ओनली यू विल लर्न फ्रॉम द हेल्प ऑफ योर एक्सपीरियंस। तो इस तरह से आप अपनी काफी जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स वगैरह हैं एट अंडर ग्रेजुएट लेवल स्पेसिफिकली, यू कैन फिक्स दोस प्रॉब्लम्स एज वेल, ठीक है। आई होप आपकी यहाँ से भी काफी हेल्प हो जाएगी इंशाल्लाह। यस, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस। Yes, sir. We have another query from a student. How to select the topic of research without the help of supervisors? And another helpline you may tell you, please. Yes, sir. देखें, सबसे पहली बात मैं बार बार आपको यही बता रहा हूँ कि टॉपिक जो होता है ना, ये इस तरह से आता है कि जैसे वो एक फेज का शेर भी है ना, आ जाते हैं गैर से मज़ामीन ख्याल, इस तरह का कोई शेर है उनका। तो ये इस तरह से आपके जहन में आता है कि जब आप किसी एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में काम कर रहे होते हैं, यू कम अक्रॉस विद सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, यू आर ऑब्जर्विंग समथिंग दैट, यार अब देखिए ये फॉर एग्जांपल पेशेंट है, इसको हम चेयर्स पे उठा के सीढ़ियों से ऊपर लेकर जाते हैं। फॉर एग्जांपल बायोमेडिकल इंजीनियरिंग का कोई स्टूडेंट है, वो देख रहा है कि भाई हम लोग स्टूडेंट्स जो पेशेंट्स हैं उनको
व्हील चेयर जो है उस पर बिठा के फिर उसको लेकर जा रहे हैं ऊपर पेशेंट को। क्यों ना हम कुछ ऐसा वो बना दे स्ट्रेचर कि जो खुद ब खुद पेशेंट को उस पर लेटा है, वो खुद ब खुद ऊपर चढ़ जाए। तो उसने क्या किया, उस पर वो एक प्रॉब्लम था उसके जेहन में आया, उसने क्या किया, व्हील चेयर और स्ट्रेचर्स को पढ़ना शुरू किया कि किस किस तरह के हो सकते हैं। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग पॉइंट से मैं बात कर रहा हूँ। तो वो उसने क्या किया, इवेंचुअली उसने एक प्रोटोटाइप बनाया, उसका सॉल्यूशन बनाया। Likewise, if you are working in some cardio department, COVID department, medicine, dentistry, आप जहाँ पे भी काम कर रहे होते हैं, you have to see the things with a different perspective. सिर्फ frequencies, percentage और prevalence पे हम लोग, these are not studies. You should go for some groundbreaking things. जो यूरोप में, फॉरेन में, इजराइल में, वहां पे जो लोग रह रहे हैं वो कोई खिलाई मखलूक नहीं है, वो भी हम आप जैसे आम लोग ही हैं, इंसान ही हैं, लेकिन वो चीजों को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखते हैं। हर वो एक प्रॉब्लम जो आपको एक प्रॉब्लम नजर आती है, you are observing that problem, that could become the title of your research until and unless you feel that as a problem. ठीक है, तो आप जरूरी नहीं है कि टॉपिक आपको सुपरवाइजर दे या टीचर दे या मेंटर दे तो ही आप स्टडी को कंडक्ट करो। आप देखो, जो भी आप देख रहे हैं कि भाई रात को हम सो रहे हैं, मोबाइल हमारे साइड में रखा हुआ है, उसकी वजह से नींद डिस्टर्ब हो रही थी। जब हम हमारे पास मोबाइल हमारे सराउंड में नहीं पड़ा हुआ था तो हमें नींद अच्छी आती थी। व्हाट कुड बी द रीजन? ट्राई टू फाइंड, व्हाई डोंट यू फाइंड आउट? भाई मोबाइल है, जाहिर सी बात है, उसकी वेवलेंथ्स हैं, उसकी अपनी एक रेडिएशंस हैं, उसकी अपनी क्यों है। यू कैन कंडक्ट रिसर्च ऑन दैट, उसको लिटरेचर रिव्यू करो कि ऐसा क्या है जो इसकी जिसकी वजह से हमारी नींद डिस्टर्ब होती है, उस पर एक टाइप स्टडी बनाओ। फिर आप एक इंटरवेंशनल स्टडी रखो। फॉर एग्जांपल आप बनाओ कि भाई अब हम इंटरवेंशन करते हैं कि ये हमने दो ग्रुप बनाए, एक वो लोग जो मोबाइल दोनों साइडों पे रख के सो रहे हैं, एक वो ग्रुप है जो मोबाइल एक साइड पे रख के सो रहा है, और एक मोबाइल ग्रुप ऑफ पेशेंट्स है जो मोबाइल को सोते वक्त अपने से 10 फुट या 5 फुट दूर रख के सोते हैं। अब उनका जो है 1 महीने का फॉर एग्जांपल आपने ट्रायल कर लिया, इसमें आपका कोई खर्चा नहीं है, यू जस्ट हैव टू एनरोल द स्टूडेंट्स और यू हैव टू एनरोल द पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स। और उससे अगर आप देख रहे हैं और एक प्रोफार्मा डिजाइन करते हैं जिसपे आप उनकी स्लीप जो बिहेवियर है वो सारा आप देखें, उनका ड्रीम बिहेवियर है, उनका इवन उनकी डाइटरी, उनका परफॉर्मेंस, ये सारी चीजें आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। दिस इज जस्ट अ थिंग आई हैव जस्ट रिसेंटली थॉट कि ये भी एक प्रॉब्लम है ना हमारे साथ। तो व्हाई डोंट यू गो लाइक दिस वे? हम हमेशा इसके क्यों कायल रहते हैं कि हमारे टीचर्स या सुपरवाइजर ही हमें आके हमारे दिमाग में जो है वो चीजें डालें तो ही हम उसके ऊपर रिसर्च करें? इट्स नॉट नेसेसरी। इट डिपेंड्स ऑन यू, यू कैन फाइंड योर ओन आर्टिकल, यू कैन सॉरी ओन प्रॉब्लम। आप किसी गांव में रहते हैं, आप देख रहे हैं कि भाई वहां पे कोई प्रॉब्लम है, व्हाई डोंट यू गो फॉर दैट थिंग? आप किसी ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं जहाँ पे आप देखते हैं कि कोई ऐसा एक प्रॉब्लम है, जरूरी नहीं है कि वो मेडिकल से ही रिलेटेड हो, वो किसी भी डिफरेंट डिसिप्लिन से रिलेटेड भी हो सकता है। यू कैन कंडक्ट द रिसर्च ऑन दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम एज वेल। सो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा से यही रहा है कि अगर आप जिस भी एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, you should go for that specific problem's solution. When you will find the solution of that specific problem, that is going to become your title, and from that title you will go for literature review, उसको और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, finally you will have your title with you. ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये सबसे बेस्ट तरीका है टाइटल को ढूंढने का। Yes, sir, you are absolutely right. And sir, one more question is from student Yes, about please. critical thinking play any role in research. Sorry, I didn't heard the word. Critical thinking play Okay. any role in research. बिल्कुल, देखें एक साइंटिस्ट में और एक डमी में यही तो फर्क होता है, एक क्लिनिकल साइंटिस्ट। अब आप देखिए ना, मैं आपसे एक मिसाल दे रहा हूँ। अभी देखिए हमारे न्यू वाइस चांसलर्स आए, ठीक है, आप लोगों ने, मैं दिस इज माय पर्सनल ऑब्जर्वेशन, जरूरी नहीं है कि आप सब मुझसे इस बात पे मुत्तफिक हो, ठीक है। आप लोगों ने एक बात नोट की होगी कि यही रोड रास्ते थे, यही एडमिनिस्ट्रेशन थी, यही ब्लॉक्स थे, यही बजट था, सब कुछ वैसा ही था ना। आपको भी कुछ चेंज नजर आ रहा है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। यस, आ रहा होगा, ठीक है। आपने देखा होगा कि वो ही रोड रास्ते ज्यादा साफ नजर आएंगे आपको, हर जगह पे आप देखेंगे कि देयर इज सम इम्प्रूवमेंट। अब देखिए उनको ये एक प्रॉब्लम लगा ना कि भाई ये एक फॉर एग्जांपल एक स्वीपर है, उसकी ड्यूटी है, उसको ये रोड साफ करना है। अब उसको क्या हुआ, ऊपर से जब इंस्ट्रक्शन मिले कि यू हैव टू क्लियर दीज रोड्स, तो वो करेगा। जब आपको एक चीज गलत महसूस ही नहीं होगी, क्रिटिकली आप उस चीज को देखेंगे ही नहीं, एक प्रॉब्लम है, तारे लटक रही हैं, आपके हिसाब से दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम, you are just observing like a dummy, so it won't create any difference.
But if you critically see the things in different from this different perspective and different scenario, it will make a different change for you. So from my point of view, you always must have a critical, mindset and critical thinking. You should everything see everything you are looking at. You should see with the critical eagle eye. Okay, तभी आप उसमें कुछ difference कर सकते हैं. Otherwise, it's useless. So yes, you should be have a critical view of every single thing. ओके सर, थैंक यू. पार्टिसिपेंट्स को जिसको भी क्वेश्चन है, इट विल बी बेटर कि वो रेस हैंड कर दें और फिर हम उनको अनम्यूट करेंगे. डायरेक्ट क्वेश्चन सर से कर लें तो बेहतर रहेगा. अच्छा सर, एक क्वेश्चन था कि अगर जो स्टूडेंट एक ही रिसर्च करता है और दूसरा नहीं करता, तो इस हवाले से इम्पोर्टेंस ऑफ रिसर्च क्या है? मतलब क्या बेनिफिट्स मिलेंगे एक स्टूडेंट को जिसने रिसर्च की है? देखिए, मैं आपको ये बार बार बताता रहा हूँ कि अगर आप अब रिसर्च इज नॉट नो मोर अ चॉइस, अब ये एक मजबूरी हो गई है. फॉर एग्जाम्पल, आपने यहाँ से ग्रेजुएशन की, इवन ग्रेजुएशन के लिए आपको डिग्री चाहिए ना, उसके लिए भी आपको रिसर्च करनी पड़ेगी. पब्लिकेशन करेंगे तभी आपको डिग्री मिलेगी. आप कहीं पे इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन दे विल आस्क यू व्हाट आर योर रिसर्च स्किल्स, हाउ मेनी रिसर्च आर्टिकल्स यू हैव. आप लोग कहीं पे स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप पोस्ट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं. देखिए, मैं हमेशा ये मिसाल देखता हूँ, आप लोगों ने अपनी यूनिवर्सिटी में देखा होगा, काफी लोग होते हैं जब व्हेन यू एंटर द यूनिवर्सिटी दे वर लेक्चरर. इवन आफ्टर 10 साल 20 साल भी वो एज अ लेक्चरर, सीनियर लेक्चरर ही रहते हैं. व्हाई दे डोंट गेट प्रमोटेड फॉर एफई, फॉर एसोसिएट और फॉर प्रोफेसर और अदर. This is the main difference. अगर आपने post graduation की, along with you have 5 research articles and a major qualification, you can become directly appointed as lecturer through AP from 18 to 19 grade. अभी मेरी for example PhD हुई, I was directly appointed in 19 grade as assistant professor. I have alhamdulillah 42 publications. Although for professor you just need 15 publications. Okay. तो 10 पब्लिकेशन हो गई, 10 years का एक्सपीरियंस, यू कैन बिकम योर एसोसिएट प्रोफेसर. 15 publications, international and some projects, and you have 15 years of post experience, teaching experience, you can become professor. Once you are professor, you can become dean, principal, director, you can become vice chancellor of any university, and you have all the privileges, and you will be promoted to 21st grade as well. तो मेरे ख्याल में ये आपकी लाइफ ही इसके ऊपर डिपेंड करती है. अगर आप रिसर्च नहीं करते हैं तो यू आर नथिंग. इवन आपको आपके एकेडमिक तो दूर की बात है, आपके घर में भी कोई इज्जत नहीं देगा. सीधी सी बात है. फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, रिसर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउअडेज. एंड आल्सो यू कैन डू द बेनिफिट्स ऑफ ह्यूमन काइंड. आप अगर एक देखें, मार्क जकरबर्ग ने क्या किया, उसने भी एक रिसर्च की, उसने एक फेसबुक बना दिया. एवरी ID you are creating, he is earning $1. ठीक है, उसने एक पेटेंट बनाया ना. रिसर्च क्या है? पेटेंट ही तो है. आपने एक पेटेंट बना दे, घर जाके सो जाए बस. और क्या करना है आपने? पूरी जिंदगी आपको रॉयल्टीज मिलती रहेंगी. एक वैक्सीनेशन बना दे, कोई एक डायग्नोस्टिक किट बना दे, कोई भी एक ट्रीटमेंट बना दे, कोई भी कुछ भी ऐसा बना दे. फ्रॉम रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू, आपने कोई एक पेटेंट जो है वो बना लिया, जिंदगी भर आप उसको रॉयल्टीज आपको मिलती रहेंगी. यू विल अर्न द मनी. सो फ्रॉम मनी पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम ह्यूमन बीइंग बेनिफिट पॉइंट ऑफ व्यू, आपने कोई ऐसी बीमारी की इंजेक्शन है या ट्रीटमेंट है बनाया जिससे किसी एक की भी जान आपने बचाई, तो किसी एक की जान पूरी इंसानियत की जान बचाना है ना. जैसे एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्लेआम है. जस्ट इमेजिन उसका सवाब कितना होगा आपको. एंड देयर आर मेनी थिंग्स फ्रॉम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू और फ्रॉम ह्यूमन बीइंग काइंड ऑफ व्यू एज वेल. एनी अदर क्वेश्चंस? ओके, थैंक यू सर. पार्टिसिपेंट को किसी को क्वेश्चन है, यू पीपल मे आस्क राइट नाउ. No questions? Yeah sir, I suppose no more questions sir. In the Okay, end, that's good. अगर Yes. सर क्वेश्चन है, what is ठीक है. inductive reasoning? Sorry? What is inductive reasoning? देखिए, इंडक्टिव रीजनिंग आप जब क्रिटिकल थिंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे होते हैं ना, तब आपको ये चीजें काम आती हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च टाइप्स काम आते हैं आपको. लेकिन व्हेन यू आर वर्किंग एज अ रिसर्चर, डोंट गो फॉर बुकिश डेफिनेशन एंड दीज थिंग्स. जस्ट गो. मेरा हमेशा से ये असूल रहा है कि मैं इवन
जो आपका थ्योरी है ना, जो आपके लेक्चर्स होते हैं, उसमें भी वो चीजें सारी स्किप कर देता हूँ जिनका आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में कोई इंटरफेरेंस नहीं है। मैं वो सारी चीजें पढ़ाता भी, मैं वो सारी चीजें हूँ जो आपको प्रैक्टिकली भी लाइफ में हेल्प आउट करे। So instead of going for these, terminologies and bookish things, you just go for the practical things. Okay? मैं सारा आपको प्रोसीजर अभी बता चुका हूँ. So you just have to follow that procedure and you will have all the answers for that specific thing. ओके सर, थैंक यू सर। इन लास्ट अगर आप कोई ट्रिक्स वगैरह स्टूडेंट्स को गाइड करना चाहें पर्सनली। There are many tricks. देखिए रिसर्च आर्टिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी मुझे ज़हन में आया कि एक काफी को तो पता होगा, जिनको पता नहीं है तो एक और चीज मैं बता देता हूँ कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको कोई आर्टिकल चाहिए, एक वेबसाइट है साय हब के नाम से, ज्यादा लोगों को मे भी पता भी हो, साय हब के नाम से, ठीक है। जिनको पता नहीं है मैं उनके लिए बता रहा हूँ। तो ये साय हब हमेशा इसका ये जो डोमेन है वो चेंज होता रहता है, सो डोंट वरी अबाउट दैट थिंग। ये एक वेबसाइट है, आपको कभी भी कोई भी आर्टिकल चाहिए, यू विल जस्ट गो फॉर, मतलब आई एम नॉट सेइंग 100% ऑल आर्टिकल्स, बट मोस्ट ऑफ द आर्टिकल्स मींस 80 to 85% आर्टिकल्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट, जो भी साइंस डायरेक्ट में है वो तो मोस्टली सारे ही मिल जाते हैं, ठीक है। जैसे ये फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ से इसका डीओआई कॉपी किया, किसी भी आर्टिकल का डीओआई होता है डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई, और इस साय हब में जाके आपने जो वेबसाइट जो मैं बता रहा हूँ ये वाली, यहाँ पे देखें इंटर यूआरएल, पीएमआईडी और डीओआई और रिसर्च स्ट्रिंग, कंट्रोल करके पेस्ट करेंगे, ओपन करेंगे। आजकल वैसे इसका वो चल रहा है, रशिया का और यूक्रेन की वॉर चल रही है, तो ये एक्चुअली रशिया की है वेबसाइट, तो इंटरनेशनली इसके ऊपर काफी सैंक्शंस है, तो मे भी कभी कभार ये काम कर रही होती है, कभी कभार नहीं भी कर रही होती है। लास्ट टाइम भी मैंने चेक किया तो इट वाज नॉट वर्किंग, यस दिस इज द सेम प्रॉब्लम इज कमिंग, बट अदरवाइज इट विल सॉर्ट आउट। उसमें ये होगा कि आपने जो भी आर्टिकल आपको चाहिए, आप यहाँ से सिर्फ वो कॉपी करेंगे, ठीक है, आर्टिकल जो भी आपको चाहिए, और सॉरी एक सेकेंड, पबमेड में जाके आप, सॉरी साहिब पे आप जाके यहाँ पे एंटर कर देंगे तो वो आपके पास ओपन हो जाएगा पूरा आर्टिकल। तो ये भी एक तरीका, और भी काफी वेबसाइट्स तो हैं जो आप आर्टिकल्स के डाउनलोड के लिए काम कर सकते हैं, लेकिन एट अंडर ग्रेजुएट लेवल आई विल सजेस्ट यू ऑलवेज गो फॉर पबमेड और गूगल स्कॉलर, वहां से आपको पूरा पीडीएफ फाइल मिल जाता है, यू कैन जस्ट डाउनलोड देम, ठीक है। तो दीज आर द बेसिक्स, ओके। इसके अलावा अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज आस्क मी। देखिए मेरी जी जी वो बोले। जी सर आप बोले। मैं मैं अभी कम्युनिटी डेंटिस्ट्री में होता हूँ, ठीक है, लेकिन मेरी ऑफिस मेडिकल रिसर्च सेंटर में भी है, एमआरसी में, ठीक है। मेडिकल रिसर्च सेंटर एचपीएल के बिल्कुल अपोजिट एक ऑफिस है, हमारी बिल्डिंग है, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा कोई चीज है, कोई प्रोजेक्ट है, कुछ भी है, यू आर मोस्ट वेलकम टू कम, यू कैन कांटेक्ट मी। अंडर ग्रेजुएट के हमारे वर्कशॉप के, सॉरी इसके व्हाट्सएप के ग्रुप बने हुए हैं, यू कैन ज्वाइन दोस ग्रुप्स, यू हैव स्टडी प्रोजेक्ट्स, यू कैन कम। मेरे अंडर ग्रेजुएट काफी स्टूडेंट्स जो हैं वो भी इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल्स में अपने आर्टिकल्स पब्लिश कर रहे हैं, अंडर ग्रेजुएट लेवल्स के स्टूडेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, जिनको मैंने पर्टिकुलरली पढ़ाया है स्पेसिफिकली। सो व्हाई डोंट यू कैन डू दैट थिंग, यू कैन इवन डू दोस थिंग्स। पोस्ट ग्रेजुएट के भी काफी स्टूडेंट्स जिनको मैंने पढ़ाया वो भी अभी अपने आर्टिकल्स पब्लिश कर रहे हैं। ये एक जिन है, बस आप इसको हम पता नहीं क्या समझते हैं, अदरवाइज इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट रिसर्च। यस ये सर एक क्वेश्चन है स्टूडेंट का कि पब्लिकेशन फी ऑफ करवानी हो तो। देखिए मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि पब्लिकेशन फीस जो होती है वो ऑफ नहीं होती है। तीन कैटेगरीज है। पहली कैटेगरी जर्नल होते ही फ्री है, उनमें आप आर्टिकल्स भेजो, लेकिन वो हाई वेटेज आर्टिकल होते हैं, जर्नल होते हैं। दूसरी कैटेगरी, उसमें क्या होता है कि वो कम फीस लेते हैं, जैसे हमारे पाकिस्तान के इवन इंटरनेशनल जर्नल्स भी वो 5000 to 25,000 की मैक्सिमम फीस होती है, उसमें पब्लिश हो जाते हैं। अगर आप 5 फॉर एग्जाम्पल ऑथर्स हैं, 5,000 भी अगर आप अमेरिकन सिस्टम करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। कभी कभार आपको फंडिंग एजेंसीज होती हैं, वो भी आपको फंड करती हैं कि भैया ठीक है आप भले इम्पैक्ट फैक्टर में अपना आर्टिकल पब्लिश करें, उसकी जो भी फीस होगी हम आपको पे करेंगे। या फिर क्या होता है कि जो इंटरनेशनल जर्नल्स होते हैं उनको आप लिखते हैं कि भाई बिकॉज वी आर फ्रॉम एन अंडर डेवलप्ड कंट्री, तो आप हमारी फीस जो है वो वेव्ड ऑफ करें। अब ये है कि कभी कभार वो वेव्ड ऑफ कर देते हैं, लेकिन 90% केस में वो नहीं करते हैं, तो वो क्या करते हैं आपकी फीस को कम कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर वो आपसे $100 मांग रहे हैं तो उसकी जगह पे आपको बोल देंगे कि आप $50 दे दो। तो इस तरह से कुछ सिस्टम होता है उसका, ठीक है। तो फीस माफ वाला सिस्टम जो है वो बहुत कम ही होता है।
या ऑफ वाला सिस्टम जो है वो बहुत कम ही होता है। इसी पे तो वो कमा रहे होते हैं, तो वो ऑफ कैसे कर दे। बाकी मैंने आपको बता दिया काफी ऐसे जर्नल है जिनमें फीस होती नहीं है, यू कैन आल्सो टारगेट दोस जर्नल्स एज वेल। बाकी जर्नल कैसे टारगेट करना है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। लिस्ट वहां से आप निकाल लें, फिर जो जो जर्नल उसमें आता है उसको आप टारगेट करो, उसकी फीस देखो, उसको फॉलो करो, उसमें आर्टिकल भेज दो पब्लिकेशन के लिए। यस ओके सर। एंड सर ऑथर 1 2 3 इनका कोई फर्क होता है कि नहीं मतलब ऑथर नहीं, 1? all 6 authors have equal contribution, have equal credit. So publication के लिए अगर मेरा even छठे नंबर पे भी नाम होगा, I will be counted as equal, चाहे वो फर्स्ट पे हो, 6 पे हो, 4 पे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, all are equal। पहले होता था, अब नहीं होता। पहले फर्क पड़ता था जब पीएमडीसी था, अब पीएमसी है तो एचईसी ने ये सारा फर्क खत्म कर दिया, अब ऐसा कुछ भी नहीं होता। यस, एनी अदर क्वेश्चंस? I think so, sir. No more questions. So, sir, in end, what do you say about the study aid project team, their efforts, and बहुत अच्छा है, आई रियली अप्रिशिएट। और इस तरह के पद जो है वो सेशंस होने चाहिए, स्टूडेंट्स को हेल्प आउट होंगे। काफी लोग अगर फॉर एग्जांपल अभी अवेलेबल नहीं भी थे, आप इसको अपलोड कर देंगे बाद में भी, तो दे विल इवन retrospectively you can get help from these things। so इसमें ये है कि देखिए बेसिक्स हैं, हम लोग वो जब तक एक चीज हमारे सर में आके नहीं लगती ना, हम लोग वो चीजें नहीं करते हैं। लेकिन रिसर्च जो है ना वो हमेशा हमारे सर में लग चुकी है ऑलरेडी, ये मैं आपको बता दूं। तो देयर इज नो एनी एस्केप, ठीक है। तो आज नहीं तो कल सबको ये मेहंदी तो अपने हाथ पे लगानी ही है रिसर्च वाली। तो बेहतर ये है कि बेटर नाउ देन लेट। मेरा तो यही आप लोगों को सजेशन होगा। बाकी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आई ऑल्सो अप्रिशिएट एंड आई से बेस्ट ऑफ लक एंड बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स एज वेल। मेरे लाइक कभी भी कोई काम हो, इफ यू नीड एनी हेल्प फ्रॉम माय साइड, यू आर ऑलवेज वेलकम। okay, sir? Thank you so much for your precious time. Allah Hafiz. अल्लाह Thank you, हाफिज़, sir. टेक केयर। Hello.